and we are talking about period 3 as a special example in your syllabus. हम period 3 के बारे में बात कर रहे हैं, and period 3 start from sodium and ends at argon. And periodicity of physical properties. Periodicity mean there are a certain pattern of physical properties. Or periodicity mean basically a pattern seen in a periodic table, in a period. Pattern in what? Physical and chemical properties. Or reoccurrence of physical and chemical properties, a sort of repetition. और अगर हम periodicity कल हमने देखी of atomic radii that decreases from left to right, ionic radii that decreases and then increases for anions, and we discuss other things regarding basics. Then अगर आपने lesson miss किया ना, आपने recording जरूर देखनी. So periodicity of physical properties में we'll move on. Sir. Yes. सर जो रिकॉर्डिंग थी उसके अंदर सिर्फ इतना था कि बिल्कुल अभी आपने सिर्फ उसकी डेफिनेशन बताई थी कि वो एंड हो गई, लेकिन सर वो वैसे तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो पिछले चैप्टर में हमने पहले भी पढ़े थे सर. लेकिन एक चीज थी कि जिस तरह वहां पे लिखा होता कोवेलेंट रेडिया है, अगर आप वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते. You see, if like अगर हम ये कुछ भी पूछा करें, जहाँ दिल आए क्वेश्चन पूछा करें, प्राइमरीली ये क्लास आप लोगों की है, सो बेसिक पर्पस आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर एंड से रादर देन एनी रिकॉर्डिंग्स. सो अगर मैं ये कहूँ कि एटॉमिक रेडियाई ऑफ मेटल्स, so it means we are talking about metallic radii, and metallic radii may be center of the nucleus, distance from the nucleus to the edge of the electronic cloud, or it may be a sort of distance between the nuclei of the two metals joining together and divided by half, divided by 2. और जब हम कहें, क्योंकि पीरियड 3 में सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल, बट सिलिकॉन इज अ सेमी मेटल, एंड आगे 15 एटॉमिक नंबर फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है. तो दीज आर नॉन मेटल्स एंड दे स्टे इन द फॉर्म ऑफ डायटम्स, दे आर डायटोमिक, एंड कोवेलेंट बॉन्ड है क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में. तो अगर हमने इनका रेडियस निकालना है तो बेटर इट इज दैट we actually take a measure of the internuclear axis, distance between the nuclei of two covalently bonded atoms, and then divide with 2. So that is covalent radii. Because when we divide with 2, it is atomic radii of any non-metal. तो हमने एक बात देखी कल ज़हन बड़े ध्यान से कि as you move from left to right, atomic radii decreases, like sodium, then magnesium, then aluminum, silicon, phosphorus, and then chlorine and argon. Atomic radii decrease करता है left to right. Reason for that decrease is because left to right shell is always constant in a period, वो तो change नहीं होता. But proton number kept on increasing. अगर ये +1 है तो यहाँ पे 2 protons होंगे, यहाँ पे 3 protons होंगे. Suppose like sodium में 11 proton है, argon तक 18 हो जाते हैं. As proton number increases, nuclear force keep on mounting up on the same number of shells, like 3 shells in third period. So 3 shells of sodium are attracted by less nuclear force as compared to 3 shells of argon, which are attracted by stronger nuclear force of 18. And shielding effect is same, because shielding effect increases by increasing the shields. Shields I call the shell. तो shell तो वही रहता है. As a result जो है left to right nuclear force increase होती है. As a result size decrease करता है, और इसीलिए आज हम देखेंगे कि ionization energy increases from left to right. Apart from those dips जो हम atomic structure में पढ़ चुके हैं. So we're talking about atomic radii. It means it decreases from left to right. सर एक और क्वेश्चन है, जिस तरह सोडियम है, सोडियम के अगर हमने उसका एटॉमिक रेडियाई फाइंड आउट करना है तो उसके मेटालिक जो 2 एटम्स होंगे उसके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो एटॉमिक रेडियाई कंसीडर होगा. अगर हम कहें कि ये 2 एटम्स हैं और उनके बीच जो न्यूक्लियाई हैं उनका जो डिस्टेंस है उसको 2 पे डिवाइड करें तो वो डिस्टेंस मिल जाएगा जो न्यूक्लियस से लेकर एज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड.
or metallic radii purely can be the distance from the nucleus to the edge of the electronic cloud. Distance from the nucleus to the edge of electronic cloud. Because atom का radius है ना, हमने वो देखा. Then comes melting and boiling points, primarily melting points. तो अगर हम मेटल मेल्टिंग पॉइंट्स का एक रफ सा ग्राफ ड्रॉ करें, हर चीज के लिए हम कर रहे हैं, and elements of the third period, elements of third. तो आप देखेंगे कि सोडियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है मे बी दिस, देन मैग्नीशियम का थोड़ा ज्यादा है, देन एल्यूमिनियम का थोड़ा उससे ज्यादा है. मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का इतना डिफरेंस नहीं, but silicon got a very high melting point, and then we see a decrease like phosphorus का, and then phosphorus is sulfur का थोड़ा ज्यादा और फिर क्लोरीन का कम. If I name them, this is sodium 11, magnesium 12, aluminum 13, silicon 14, phosphorus 15, sulfur 16, chlorine 17. Okay, argon definitely hardly have any data available. Monoatomic it is, but definitely the melting point is much less because monoatomic है और gaseous form में है और intermolecular force बहुत ही कम होती है इनमें, pure van der Waals force. तो melting point का trend क्या है? Sodium got a metallic bond of 1 plus, like sodium का अगर हम बनाएं तो it is Na1 plus. Metallic bond कैसे होता है? Metal cations, and metal cations got a charge equivalent to the number of valence electron they have. So metal's cation surrounded by sea of delocalized electrons. Sodium's melting point is lowest in the periodic table, lowest in the period 3. Reason its metallic bond is weak. Because electrostatic force of attraction between 1 plus and number of delocalized electrons are also less, is weak. Strength of the metallic bond for magnesium is higher as compared to sodium because it is 2 plus. Its valence electron are also more. So as the strength of the charge increases, magnitude of the charge increases because magnesium has 2 electrons in the valence shell, it is 3s2, and strength of the metallic bond increases because delocalized electrons are also more. Metallic bond की strength increase हो जाती है अगर magnitude of charge ज़्यादा हो जाए. Automatically magnesium has last shell containing 2, 3s2. So उसने valence electrons are basically sent to the sea of delocalized electron. So metallic bond is an electrostatic force of attraction between metal's cation and sea of delocalized electron. So obviously magnesium's magnesium metallic sphere or metal cation got a 2 plus charge, and number of delocalized electrons are also more. Why not? The strength is more. So magnesium got a higher melting point as compared to sodium. Sodium is so soft you can cut with a knife because metallic bond weak है. Magnesium on the other hand, magnesium strip आपने lab में देखनी, it is harder than sodium. When we move to aluminum, aluminum से cooking utensils बनाते हैं, car bodies बनाते हैं, aircraft बनाते हैं. इसकी famous alloy duralumin है, magnesium और aluminum का mixture. The reason an aluminum got a very high tensile strength, और उसका भी reason यही है. एल्यूमिनियम का जो मेल्टिंग वो है मेटालिक बॉन्ड है, that is more stronger because more delocalized electrons. It contributes 3 electrons per atom to the C, and its cation is also heavily charged, 3 plus. Then who can deny a strong electrostatic force between aluminum's cation and C of electron? That is the reason aluminum got quite a high tensile strength, and it is lightweight, packing is not much, layering is not that thick. So because of that, aluminum got a low density. That becomes an advantage because high tensile strength, high melting point, and low density make it fit for lighter bodies. Aircrafts lighter हो गए, गाड़ियाँ lighter हो गई because of aluminum. And not only the pure aluminum is used, rather to give it a strength,
a bit of more hardness, pure metal is changed into an alloy. An alloy is called as ड्यूरेलमिन. आप लोग ओ लेवल में पढ़ के हैं कि एल्यूमिनियम की फेमस एलॉय क्या होती है, आप कहेंगे इट इज ड्यूरेलमिन. दैट इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मैंने लिखा ऊपर एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड जिंक. जिंक बहुत थोड़ा होता है, बिकॉज जब एलॉय बनती है तो मेटल का जो यूनिफॉर्म साइजेस होते हैं एटम्स के, दे आर नॉट देयर. बिकॉज अगर यूनिफॉर्म साइजेस हैं, सिमिलर रेडियाई हैं, सिमिलर इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं, फाइन लेयरिंग है, लेयर स्लिप्ड. लेकिन जब आप नॉन यूनिफॉर्म साइजेस बीच में डिफरेंट के घुसा दें, तो इसका मतलब ये है कि इट मीन दोज इंटरस्टिशियल स्पेसेस आर कवर्ड, नॉन यूनिफॉर्म एटॉमिक रेडियाई, layering is disrupted. When you apply a force, metals are not easy to push. Their layers are not easy to push because they are not the proper common layers. There is disruption. And when you push, actually, those smaller atoms push against, take up those spaces, मुश्किल हो जाता है. आप सिंपल अल्फाज में बताएंगे कि when alloy made basically, हमने पढ़ा उसमें metallic bonding में, non-uniform atomic radii are there, layering is disrupted, it's not easy to push them, so they become harder, they become less malleable, and they become less softer alloys. तो एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट इसलिए ग्राफ में आपने देखा हायर है. एल्यूमिनियम से सिलिकॉन पे जाएं तो एक बड़ी इंक्रीज आई है. अगर आपको ग्राफ सामने नजर आ रहा है ऐसे, सिलिकॉन पे एक मेगा इंक्रीज आती है. भाई क्यों? तो आप कहेंगे एक पीरियोडिसिटी या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, हम हर एलिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं जो हमारे सिलेबस में, लाइक पीरियड 3, ग्रुप 2, ग्रुप 17, ग्रुप 7 जिसको आप कहते थे. बिकॉज 10, 92 और 100 एलिमेंट्स, दे आर बेसिकली द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस यूनिवर्स. इसके अलावा कोई है तो आप ले आए. हमेशा कहता हूँ कि हमारा सी जो है, हमारा जो प्लेनेट है, 3/4 तो सीज एंड ओशंस एंड वाटर है. तो ये 3/4 तो सिर्फ दो फाउंडेशन स्टोन्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और पूरे स्टार्स जो हमें नजर आ रहे हैं और सन जो हमें गर्मी दे रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन टर्निंग टू हीलियम, फ्यूजन रिएक्शन. मोस्ट abundant foundation stone in the universe is hydrogen. ओके, खुद भी फ्लेमेबल है एंड हाईली रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन फ्यूल सेल की फॉर्म में, हाइड्रोजन पावर कार्स एक्सेट्रा जनरेटेड, एंड हाइड्रोजन एज अ वेरी यूजफुल रिएक्टेंट, रादर द रिएक्टेंट टू प्रोड्यूस अमोनिया, it has its own importance. And hydrogen as a part of every hydrocarbon and every protein that is actually from a dinosaur to a small animal or a human being. तो इट मीन एक फाउंडेशन स्टोन अगर आप ले लें तो उसकी इंपॉर्टेंस देख लें कि 80% हमारी बॉडी प्रोटीन्स की बनी है, एंड हाइड्रोजन इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इट. तो आप सोचें ये बाकी कितने इंपॉर्टेंट है. एंड वी आर लिविंग इन आयरन एज, आयरन हैज इट्स इंपॉर्टेंस, एल्यूमिनियम हैज इट्स इंपॉर्टेंस, एल्यूमिनियम हेल्पिंग आयरन टू वर्क एंड लाइटर, ताकि हमें लो पावर इंजन मिलें और फ्यूल सेविंग हो और पोल्यूशन ना हो. सो देयर इज डिस्कशन अबाउट एवरी एलिमेंट. इवन अगर आप सोडियम देखें तो सोडियम इज सॉफ्ट and sodium can be cut with a knife. It has a low vaporization, easy vaporization, a low melting point, and produces a yellow glow. So sodium is used in street lights to produce the best quality fog penetrating lights. Super classic yellow glow. May not be seen in Pakistan much, but hota tha pehle. और फिर sodium is used in nuclear reactors and other machines to dissipate the heat energy from the core reactor. कितने एक एक के यूजेस हैं. और अगर आप क्लोरीन देखें इसी पीरियड में है, कहते हैं क्लोरीन has saved more lives than medicines, and it is saving because it is disinfectant, it is water purifier, it is an element actually that is acting more than the medicine. सारा पानी डिसइंफेक्टेंट, जर्मिसाइड, वाटर प्यूरिफायर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में यूज हो रहा है. तो एक एक एलिमेंट की अपनी इंपॉर्टेंस. हम सिलिकॉन पे आए इसके मेल्टिंग पॉइंट पे, तो सीधी बात है सिलिकॉन गॉट अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट because silicon is in group of carbon, elder brother of carbon. Silicon is a macromolecule, and when it is a macromolecule, it means it has a giant network of covalent bonds, just like carbon, just like diamond. So it grows like a macromolecule. So there is no concept of an intermolecular force. Rather, each of the atom is knitted with other by a strong stitch of covalent bond. And in order to melt it, a macromolecule, आपको कुछ covalent bonds तोड़ने पड़ते हैं.
तो why not the silicon is a giant covalent structure? रट्टा नहीं फेरें इसको, इसकी रूह समझा करेंगे when we talk about anything. Giant covalent structure mean numerous never-ending network of strong covalent ropes. You want to melt it, you are not going to break any intermolecular force like in a simple molecule like chlorine or phosphorus or sulfur. यहाँ आपको कोवलेंट बॉन्ड तोड़ने को. तो सिलिकॉन के बाद ग्राफ फिर नीचे आ. अगर सिलिकॉन का ग्राफ ये था तो फास्फोरस का ये है, सल्फर का और क्लोरीन. बिकॉज बैक टू द फास्फोरस, इट मीन इट इज अ सिंपल मॉलिक्यूल. Phosphorus stays as P4. It is tetraatomic. When it is tetraatomic, internal covalent bonds are strong, but in between one tetraatomic molecule and other molecule of phosphorus, hardly there is a bond. Rather, there is no bond definitely. It depends on only an intermolecular force. और वो कौन सी intermolecular force है? When all the atoms are alike, it means they can't have a charge. So there can't be any concept of polarity. तो जब polarity नहीं है, charge नहीं है, तो it means simple induced dipole-dipole force होगी जो involve. On that induced dipole-dipole force, you know, or instantaneous dipole-dipole force, the temporarily induced dipole-dipole force, the London dispersion force, that is so weak to operate. That is the reason the phosphorus has a low melting point, much, I think, closer to, in graph to the sodium. तो आप इसकी क्या डिस्क्रिप्शन देंगे? A simple covalent molecule. Simple covalent molecule dependent on weak intermolecular forces. Terminology you are using, machine will pick. Examiner will pick. Generalizing, machine is not going to pick. कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे. इसलिए अगर आप बुक को नहीं यूज कर रहे, बुक को अंडरलाइन नहीं कर रहे, बुक के क्वेश्चंस नहीं कर रहे, तो इट मीन यू कैन नॉट हैव दैट राइट वर्डिंग, सुपर लैंग्वेज टू फिट इनटू द मार्क्स. बिकॉज ओ लेवल्स में आइडिया मार्क करते हैं, उन्होंने ओ लेवल्स की भी चेकिंग इतनी हार्श की है इस बार. तो ए लेवल्स तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा. तो मेरी बात याद रखा करेंगे, आप बुक को जरूर अंडरलाइन किया करें, उसके पॉइंट्स देखा करें और उसके क्वेश्चंस किया करें, क्वेश्चंस के आंसर मैच करके देखा करें. उससे आपकी एक सॉर्ट ऑफ कंप्रीहेंशन स्किल आएगी, एंड देन यू कैन एक्चुअली मैच अप विद द कैम्ब्रिज स्टैंडर्ड आंसर, ओके, फॉर एन ए लेवल सर्टिफिकेशन. डोंट मैस इट विद ओ लेवल्स, ओके, दैट वाज ऑफ नो कंपैरिजन. सो जब फास्फोरस की बात करें तो बुक साहब ने फास्फोरस की बात होगी तो कहेगा फास्फोरस के बाद सल्फर पे इंक्रीज क्यों आ गया? तो आप कहेंगे बिकॉज अक्सर पूछता है, तो आप कहेंगे सल्फर इज आल्सो अ सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल dependent on simple induced dipole-dipole forces, temporary induced dipole-dipole forces, simple kind of forces, intermolecular forces. But since strength of induced dipole-dipole forces increases if number of atoms per molecules are more, because that increase the extent of instantaneous dipole. And when the instantaneous dipole is increased, of course induced dipole भी increase होगी. So उससे क्या बनेगा? उससे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ी स्ट्रांग होगी. तो इसीलिए कभी भी ग्राफ में देखें आप, तो अगर फास्फोरस ये है तो सल्फर उससे ऊपर है, फिर क्लोरीन नीचे, आर्गन नीचे, बिकॉज ये डायटोमिक है. लेकिन हैं सारे सिंपल मॉलिक्यूल्स. तो आप कहेंगे सल्फर एक सिंपल मॉलिक्यूल है, सिंपल कोवलेंट है, नॉन पोलर है, डिपेंड करता है इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस पे, एंड दीज इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस गेट स्ट्रेंथन अप if number of atoms per molecule are more, because it means more protons and more electrons, more strength of instantaneous dipole, more strength of induced dipole. So that makes sulfur high melting as compared to phosphorus. थोड़ा सा फर्क. क्लोरीन पे आएंगे तो आप फिर कहेंगे it's a simple molecule in the gaseous state and depend on non-polar, because like atoms, no charge difference, depend on induced dipole-dipole force. Strength of induced dipole-dipole force is so weak it's a gas, so the melting point is very low. And then you go to argon. Argon has the lowest of the melting point because argon is monoatomic. Strength of induced dipole-dipole force is negligible. It means that actually, इसीलिए जब हमने आइडियल गैसेस पढ़ी थी तो हमने कहा argon comes closer to the ideal behavior because attractive force between them is very low. और इंड्यूस आइडियल गैसेस का बेसिक पोस्टुलेट यही था कि an ideal gas is the one that in between particles there is no attractive force,
And noble gases qualifies a lot for it. Okay, although they are also not ideal because at low pressure, at high pressure and low temperature, they get closer. They may be liquefied. No doubt, बहुत ज़्यादा high temperature, low temperature चाहिए होता है उनकी liquefaction. अमोनियम -39 पे हो जाता है बिकॉज पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है. लेकिन हीलियम जो है या नियॉन जो है इनका बहुत नीचे. तो दैट इज हाउ यू विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. इनऑर्गेनिक में से मार्क्स लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बच्चे इजी समझ के इसको जनरलाइज करने लगते हैं. तो आपने ऐसे नहीं. उसके बाद जो हमारी लास्ट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको बड़े अच्छे तरीके से हम बॉन्डिंग से पहले हमने क्या पढ़ा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्क्राइब किया था कि पीरियड 3 का अगर हम आयनाइजेशन एनर्जीज निकालें और कंपेयर करें विद नंबर ऑफ सॉरी एलिमेंट्स के साथ. mean what is the periodicity of ionization energy across period 3? What is the periodicity of ionization energy across period 3? If I draw a graph, it is sodium, then it is magnesium, then it's aluminum, then it's silicon, then it is phosphorus, then again there is a dip at sulfur, chlorine and argon. तो आपसे वैसे ही पूछेगा what is general trend? What is the general trend? Obviously, general trend क्या नजर आ रहा है? Ionization energy increases from left to right in a period. Sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon. General increase. पूछे क्यों तो आप कहेंगे अभी पढ़ा हमने. From left to right, shell is same. Shielding effect is same because electron is added in the same shell. But nuclear charge is mounting up every step right. That drags the last electron close to it and atomic radii decreases. So it becomes difficult to ionize them. So proton number, nuclear force is the most dominating factor. लेकिन जब आपसे पूछेगा डिप्स क्यों आई हैं तो आप कहेंगे these are the exceptions and that there is a valid reason for it. Because magnesium's electron is removed from 3s2, first electron. This is trend for first ionization energy. Never forget. L electron remove करने के लिए 2p6, 3s2 और 3p1. एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है भाई और उसका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो 3p1 में. I mean the last one to go should be 3p1 because it has the highest energy. It's farthest away from the nucleus. And although proton number of aluminum was 13 and it was expected that it should have a higher ionization energy, but contrary to this, it never happened. Reason or explanation cannot be other than this, that possibly in a period as you move from left to right, when first time a subshell changes, the distance is increased and 3p is at a higher energy and even shielded by 3s2, 2p6, 2s2, 1s2. But magnesium is only shielded by 1s2, 2s2, 2p6 and 3s2. 3s2 is not shielding magnesium, rather 3s2 is itself releasing electron. So it has less shielding, closer to the nucleus, possibly ionization energy. इसलिए इसको ज़्यादा लगी as compared to aluminum. और फिर पूछे एल्यूमिनियम से आगे इंक्रीज क्यों हो रही है तो आप कहेंगे दिस फैक्टर इज कैंसल्ड हियर, tackled here. Silicon proton number is dominant. That's why it is increasing from left to right. Phosphorus proton number is dominant. That is why silicon से phosphorus पे increase क्यों हो रहा है? Phosphorus has more proton number, more nuclear force, smaller atomic radii, difficult to pull the electron out. लेकिन पूछेगा from phosphorus to sulfur proton number तो और ज्यादा हो गया, ऐसा क्यों? तो आप कहेंगे possibly the only explanation is phosphorus has its last shell as half filled. Phosphorus has its last shell as half filled, singly occupied, parallel spin, more stability. But in sulfur, first time in a period as you move from left to right, its p shell, the valence shell, has a pair of electrons. So for first ionization energy, that first electron to be removed comparatively is removed by lesser use of the energy. Sulfur. Because of spin pair fight, spin pair repulsion.
पॉली द साइंटिस्ट था, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं इसको। तो आप कहेंगे जी फॉस्फोरस से सल्फर इंक्रीज तो हुआ है प्रोटॉन नंबर, लेकिन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आयनाइजेशन जी कम है, तो हम इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते कि phosphorus has the last shell P with 3 electrons in it, which should be singly occupied, as the rule says, that 1 1 1 to each to give the maximum number of unpaired electron. But in sulfur, there is a pair of electron present. And that pair of electron in sulfur possibly is the reason that there is a repulsion existing there. Although nature has, Allah Ta'ala ने एक electron right को move करता है, दूसरा left को, one clockwise, other anti-clockwise. Even then, as compared to a singly occupied, there is the repulsion. That is the reason spin pair repulsion. और कोई पूछे कि सल्फर के बाद फिर क्यों इंक्रीज हुआ है, इसमें तो दो स्पिन पेयर्स हैं, इसमें तो दो है, डबल है, तो आप कहेंगे बिकॉज दिस फैक्टर ऑफ स्पिन पेयर इज बीइंग टैकल्ड बाय द प्रोटॉन नंबर of 16. After that, that is being controlled by the proton number, neutralized at atomic number 16. So again, proton number is the dominating force till argon until end of the period. So that finishes the discussion regarding physical properties, periodicity of physical properties. That is 17 in organic chemistry. There is chapter 3, 13, 10. Chemical properties discussion हम कल करेंगे. First ionization, periodic pattern of first ionization. Sodium's is 494, so low, but argon's is 1520. But phosphorus to sulfur, there is a dip, 1060 से 1000. May not be that, but still it is. और magnesium से aluminum 736 से 577. So these anomalies are dealt by the discussion that we did. First was the distance factor, higher energy, more shielding, and second is spin pair repulsion. ठीक है, तो आपने ये पढ़ना है, इसके क्वेश्चंस करने हैं, मुझसे पूछने अगर आपको नहीं आता. Anything else? Any question? इनऑर्गेनिक थोड़ी सी थिक केमिस्ट्री है इन अ सेंस, A1 की स्पेशली. तो आपने अगर टाइम मिले तो दोबारा रिकॉर्डिंग जहन भेज देता है, तो दोबारा रिकॉर्डिंग देख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और फिर उसके बाद आपने क्वेश्चंस करने हैं. पीरियोडिसिटी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने फिनिश करना. कल हमने पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड 3 की for chapter 10, then melting and boiling points, okay, and then today we did the ionization energies and stuff. So कल इंशाल्लाह हम chemical properties पे जाएंगे. अल्लाह हाफिज़ class.